करेक्ट करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। शुरू करते हैं। Hello student, welcome to your study. I am with you Vedra Kumar Jha. In this class, you are going to learn the new topic, that is properties of ionic compounds. We have already studied what is ionic compound. Ionic compounds are formed by the transfer of electrons and mostly in between metals to non-metals. Metals are donor, they can donate the electron, and non-metals are acceptors, they accept, they gain the electrons donated by the metals. So let us start. Let's learn some of the properties of the ionic compounds. So we'll see that what are the properties of ionic compounds here. One properties that we have seen is about the melting and boiling points. जानना चाहेंगे कि क्या किसी सबस्टेंस का melting point, those who are formed by the transfer of electrons, whether the melting point is high or low, boiling point is high or low. So unless we do the experiment, we will not able to tell it. Any scientist who have told any properties, they have performed thousands of experiments. Unless you perform, nobody knows in the world any properties. But anyhow, it is not the time to do the experiment, then they learn. That is the role of the scientist. So we are learning the basic things that have been already been discovered. Further things we can add it. So melting and boiling points about, if you talk about, if we see some the values here for NaCl, the ionic compounds, Na, sodium, have given 1 electron to the chlorine, which is non-metal. This ionic compound NaCl, we said the melting point is 1074. The boiling point, which is 1686 Kelvin. If we go for further MgCl2, melting point is low, 981. But boiling point is 1685. So based on that, we see the different property. So here we'll see the different properties. For example, the physical nature. Mostly we see that, for example, NaCl, the sodium chloride, the namak, the salt. The physical nature of ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. Because the ionic compounds are formed by the transfer of electron, one positive, one negative, and positive negative के बीच में बड़ा ही attraction होता है. Positives are attracted towards negative, negatives are attracted towards the positive. A great combination होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हुआ है. तो कहते हैं जो जिसके पास नहीं है वो उसी के पास जाता है. यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव के पास जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाता है. और ऐसा होना लाजमी, जैसा कि आपने देखा था ऑक्टेट थ्योरी के बेसिस पे हम ये कह सकते थे कि मेटल के पास अगर एक दो या तीन ऑटन मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करके बाहर करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. यानी फिजिकल नेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर यही निष्कर्ष निकलता है कि द फिजिकल नेचर आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, आर समहॉट हार्ड because of a strong force of attraction between the positive and negative ions. Hard, that doesn't mean it is not, can be broken.
somehow it is hard and brittle. यहां पर हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड के लिए जो वर्ड होता है हार्ड एंड ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब होता है छाना भंगुर, जल्दी टूट जाएगा. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Next, melting points and boiling points. Ionic compounds have high melting point and boiling point, and it should be because the compounds are formed by the transfer of electrons. So here we see that कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों ही मॉलिक्यूल को बांध के रखते हैं, यहां से जाने नहीं देते, बॉन्ड को कमजोर नहीं होने देते, इसलिए उसको मेल्ट करना भी इतना आसान नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी कारण हाई होता है. आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो ये जरूर लिख लेना, लिखने का टाइम अलग से लूंगा. दूसरा है सॉल्युबिलिटी. अब तीसरा सॉल्युबिलिटी क्या? सॉल्युबिलिटी होता है कि घुलनशीलता, मतलब कैसे कोई चीज घुल जाएगी. यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water. If you talk about the salt NaCl, it easily gets dissolved into the water. So electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol etc. Yes, of course. अगर कोई चीज पानी में घुल जाती, इसका मतलब ये नहीं कि वो डीजल और पेट्रोल में भी और केरोसिन में भी घुल जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, उनका नेचर अलग होता है, डेंसिटी अलग होता है, फ्लूइड अलग तो डेंसिटी अलग. यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड, जैसे नमक सॉल्ट पानी में घुल जाता है, लेकिन केरोसिन में कभी ट्राई कर लेना. सोडियम, the next property is the conduction of electricity. The conduction of electricity to the solution involves the movement of the charged particles. A solution of ionic compounds in water contains ion which move to the opposite electron. ये पढ़ लेना इसमें. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, आयनिक कंपाउंड को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो वो घुल जाएंगे. तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट का मतलब जिसमें पानी मिला होता है, थोड़ा बहुत पानी का मात्रा हो, उसको मोल्टेन स्टेट कहते हैं, या पिघला हुआ अवस्था कहते हैं, या पूरी तरह से घुला हुआ अवस्था हो. इन मोल्टेन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी.